Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Raja Kalam Hasan Khan from Girls Middle School Kachama, Cluster Miliardon Kralpura. Dear students, today I am going to deliver lecture of class 8. Today my topic is Stars Speak to Man. It is a poem in class 8, poem number 9. It is written by Abdul Ahad Azad. To dear students, Abdul Ahad was born in 1903 and he died in 1948. He was a great writer, great poet of Kashmir. He was called John Keats of Kashmir. He was the son of Sultan Dar. So why he called John Keats of Kashmir? Because both poets, they are called modernist poets, and both died in the early 40s. So dear students, and what message he given in this Stars Speak to Man? This is a lesson for all of us because we are of the superior creation of Almighty Allah. Almighty Allah has created us for a purpose, for a aim. Why we are sent here? So through his poem is this Abdul Ahad Azad give a reminder, he give a awakening to us, he make us conscious why, what was the purpose for human being is, why we are sent and what we are doing here. So this is a very interesting poem. Through this poem, he make us consciousness what we are here, for what purpose we are sent here. And his poem, he says that, oh my creation, Allah Ta'ala Subhanahu says that I have made you to share your love, to share your affection in this universe. My aim was to be a kind-hearted man, to be a human, to be a humanity in this universe. But man, I have sent you here to give the light to this world. But you have chosen the world to give a fire to this world. You have chosen the way which is not for the purpose I have sent you here. I send for light, but you give the fire to this world. So here in this poem, he said, oh man, I send you in this world for sharing love, affection, to help the needy, to own always the needy and poor people. But what are you doing? I have given my all treasures to you, but you become a serpent who sat on them, and you not share them equality among the poor or needy people. So my dear, he give through this message to be awakened. This is a time, oh man, you are sent here for love, to share your love. You don't divide the people on the basis of caste, color, and creed. This is the whole world, is a one world, one humankind. So don't divide the people on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of color. You think that you is only the preacher of this religion, but this only you pose them, you are not actually that. So man, get awakening, be conscious, take the right path, and the purpose, you think upon the purpose and why you are sent here to share the love among these people. तो प्यारे बच्चों, ये जो नज़म मैंने अभी आप के सामने पेश की, इसका जो लिखने वाला है अब्दुल अहद आज़ाद है, उसके बारे में आपको बता दिया। तो नज़म में क्या है, इस नज़म से हमें ये समझ मिलता है, हमें अब्दुल अहद आज़ाद कहते हैं कि इंसान को इस दुनिया में किस लिए भेजा गया, प्यार बांटने के लिए, मोहब्बत बांटने के लिए, दुनिया को रोशनास करने के लिए, दुनिया को रोशनी देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। लेकिन इंसान ने ये सब कुछ भूल दिया और इंसान क्या बन गया, यहाँ बहुत ही लालची बन गया। इंसान को अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ अदा की थी, उतने खजाने उसने दिए थे, लेकिन वो इन खजानों का मालिक बन बैठा, गरीबों का हक खाने लगा, उनके साथ बुरी तरह से पेश आने लगा। इंसान जालिम बन गया, इंसान पत्थर दिल बन गया। तो इंसान को इसलिए भेजा गया था कि इंसान अपनी महज़ब लोगों को इकट्ठा करे, उनमें प्यार बांटे। लेकिन इंसान ने क्या किया, यहाँ नस्ल की बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे लोगों को तकसीम किया और अपने आप को ही कहने लगा कि मैं क्या हूँ, इस मज़हब का बानी हूँ, मैं ही करता। लेकिन वो दिखलावा करता है इंसान। तो इंसान किस तरह यहाँ पेश आया, वो कहता है कि वो इंसान करता क्या है, वो जड़ों काटता है और उसकी टहनियों को ऐसी मिसाल दी है कि साग देता है, पानी देता है। तो हमें इसे ये सबक मिलता है, ये हमें ये कहते हैं कि इंसान को किस लिए बनाया गया, अशरफुल मौत का दर्जा इसलिए दिया गया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम नहीं थी कुरूबियाँ।
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہوتی تو فرشتے عبادت کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن انسان کو ایک ایسا بنا کے بھیجا کہ وہ درد دل ہونا چاہیے، انسان جو ہونا چاہیے رحم دل ہونا چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے، پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے، اور یہی پیار و محبت دنیا میں بانٹنا چاہیے۔ تو آپ پیارے بچوں، یہ کچھ ورڈ جو میننگ ہیں میں نے اس تختہ سفید پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ اس نظم کو اچھے سے یاد کرو گے اور اپنی کاپی پہ اتارو گے تو خدا حافظ۔